आइटम नंबर 1 माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments: unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed. Proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy
has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amritkal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on three things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following four opportunities can be transformative during Amritkal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding, and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They are generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products
integrating them with the MSME value chain. The components of the scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged, Vanchiton ko Variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops
at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets, which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we'll launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahkar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fishery societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia
by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing, and research. Teachers' training. Teachers' training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, Sir, Pradhan Mantri PVTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups,
development mission is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PVTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PVTG Development Mission will be launched. This will saturate PVTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment.
I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amartkal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an urban infrastructure development fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi,
Center, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad Se Vishwas 1. Relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad Se Vishwas 2. Settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings,
wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity, DigiLocker, will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential, the labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives,
and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green credit program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan Scheme. 500 new waste to wealth plants under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa, Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years
to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. Maybe applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India international centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure
and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as the central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amritkal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries
and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. Azadi ka Amrit Mahotsav, Mahila Samman Bachat Patra. For commemorating Azadi ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores.
The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl
alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid-grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Custom duties on dore and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayer services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%.
whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024 31st March shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains,
reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnivir Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil; 3 to 6 lakhs, 5%; 6 to 9 lakhs, 10%; 9 to 12 lakh, 15%; 12 to 15 lakhs, 20%; and above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. I propose
to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. आइटम नंबर 1 माननीय तो बजट 2023 की घोषणा कर दी गई है और आखिरी के जो आधे घंटे थे उससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो थीम हम लोगों ने पकड़ी थी वो लगभग उसी तरीके की थीम पर ये बजट आया है। बजट 2023 मिशन 2024 जो सबसे बड़ी घोषणा अभी हुई है पिछले 10-15 मिनट में। फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बजट 2023 में एक मिशन 2024 की साफ साफ छाप दिखाई दे रही है। एक न्यू टैक्स रेजीम सामने आई है, उसकी घोषणा की है। पिछले आधे घंटे में ये सब घोषणाएं हुई हैं और जो सबसे बड़ी राहत मिली है वो है टैक्स भरने वालों की और उसकी दरों में कुछ बदलाव किए गए हैं और ये साफ कर दिया गया है। क्या इसके मायने निकाले जाएं, क्या मायने हैं, अभी मेरे ख्याल से सब टैक्स वाले कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे अभी। मैं कुलदीप कुमार जी, अमीरुल्लाह खान का फिर से स्वागत करना चाहता हूं स्टूडियो में और प्रवीण झा जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे राजेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका तो भाई ये क्या अमृतकाल आ गया?
नहीं, अमृतकाल नहीं, जो बेनिफिट सभी का साथ सभी का विकास जो हमारी पार्टी का एक ट्रेंड रहा है, उसके अंदर में लग रहा था मिडिल क्लास को कुछ और छूट देनी चाहिए, तो मिडिल क्लास को टैक्स का बेनिफिट दिया गया है। हाँ, लेकिन ये देखिए अभी बहुत कुछ समझने में ज़रूरी होगा इस बजट में, क्योंकि एक न्यू टैक्स रेजीम के बारे में चर्चा की गई है। आमिरुल्लाह साहब, आप बहुत बारीकी से सब लिख पढ़ रहे थे, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये ताज्जुब की बात है। ये 7 लाख तक हाँ, नो टैक्स, 7 लाख लेकिन इसमें शर्तें लागू का तारा क्या कहता है? अभी तो शर्तें समझ में नहीं आ रही। ये लग रहा है कि भाई जिनको 7 लाख तक का है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक तो शायद वो जो प्रेशर है कि मद्रास हाई कोर्ट का कि 8 लाख का EWS क्यों है जबकि 2.5 लाख का एग्जेम्पशन है, तो वो मद्रास हाई कोर्ट ने कह भी दिया था कि उसको या चर्चा कर रहा है उसकी। दूसरी बात ये कि अगर आप देखें तो नीति आयोग और प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल कई डेटा है कि 90% इंडिया को 2.5 लाख से कम की तनख्वाह मिलती है। तो ये जो फर्क पड़ेगा ये उन 4% को जो 2 लाख से 7 लाख में है। वो जो 15 लाख से ऊपर के 5% है, अगेन आप सब लोग जो इस कमरे में हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रवीण जी, आपके इनिशियल इम्प्रेशन? निश्चित तौर पे एक छोटे तबके के लिए ये जो घोषणा हुई है उससे वो बहुत प्रसन्न होंगे। और जैसा आमिर भाई ने कहा कि उसके जो बाहर हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाकी सारी नीतियों का ये देखना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो फिस्कल एनवेलप, जो साइज ऑफ द बजट जो है वो कह रहे हैं 45 लाख करोड़। जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था ये 41.9 लाख करोड़ था नॉमिनल टर्म्स में। अगर इसमें आप मुद्रास्फीति का दर जोड़ के देख लें तो ये तो तकरीबन वही ठहरा हुआ है या उससे थोड़ा कम है। इन्फ्लेशन रेट को देख लें आप, खर्चा रियल टर्म्स में आप कहाँ बढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन रियल टर्म्स एसेंशियली वी आर स्टैग्नेंट। राजेश जी, आपका जवाब? सर, राजेश, इस पर सर जो है यही खासियत है बजट को समझने वालों की कि टैक्स की तो छूट दे दो, आप आमदनी तो और बढ़ाओ नहीं, और आप खर्चा बहुत बढ़ा दो। कहां से बढ़ाओगे भाई? जो आप आमदनी करोगे उसी से तो खर्चा बढ़ाओगे। टैक्स की रिबेट आप दे रहे हो। आपने 87A में जो आज मिडिल क्लास काफी दिनों से त्रस्त था, उस आदमी को एक राहत मिली है। और अगर राहत मिली है तो आपकी इनकम में तो कमी आई है ना 37,000 करोड़ की, वो तो सामने अभी बताया डाटा। तो वो जो आपको कमी आई है उसको एक चीज जो मैं बोल दूं जो अच्छी लगी संकेत, वो महिला सम्मान बजट पत्र, ये अपने आप में ये बहुत अच्छा है। अगर आमिर जी आप कैसे देख रहे हैं, 2 साल के लिए 7.5% अगर महिलाएं 2 लाख तक डाल सकती हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट का जरिया महिलाओं को, ये कुछ 15-20 हज़ार औरतों को फर्क पड़ेगा। कितनी औरतों के पास 2 लाख रुपए बैंक में होते हैं? बैंक अकाउंट ही कितनी औरतों के पास? तो ये एक इंडिकेटिव है अच्छा मूव, बट बहुत कम लोगों को तो ये हर कोई देश में हर महिला कर सकती है। हर महिला के पास अकाउंट ही नहीं है। बहुत इतने कम महिला अकाउंट हैं जिनके, और 2 लाख किसके पास होते हैं? 15,000 से 2 लाख हो और वो भी आप डाल सके मैं क्योंकि अगर आप देखिए कि 50% इंडिया 15,000 रुपए से कम कमाता है अब आज, और 90% इंडिया 25,000 से कम कमाता है। ये मर्दों की बात हो रही है, औरतों की का तो जिक्र ही नहीं है। तो ये तो बहुत कम लोगों के लिए बिल्कुल। तो जो औसत आय 1.97 लाख है, वो आंकड़ा दिया गया, वो क्या है? वो $2,100। और आप देखिए इस $2,100 में हम 145वें पोजीशन पे हैं दुनिया में। तो वो $2,100 पिछले 4-5 साल में बढ़ा ही नहीं। तो वो एक तशवीशनाक मुद्दा है कि पिछले 5 साल से हमारी पर कैपिटा इनकम वहीं की वहीं रह गई। जी प्रवीण जी, एक इसमें खाली इसी कड़ी में जोड़ दूं, इनइक्वालिटी जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और इसलिए आप ये देख रहे हैं कि जो बहुत छोटा तबका है, और सारे आंकड़े आपको पिछले 5-7 वर्षों के आपको बताएंगे कि जो जिसको हम बिलियनर्स कहते हैं, डॉलर बिलियनर्स, उनकी आय में इतनी ज़बरदस्त प्रगति हुई, लेकिन जो नीचे के तकरीबन 70-80% लोग हैं उनकी आय में, जैसा आमिर साहब ने कहा, वो बढ़ोतरी तो आप छोड़ दीजिए। अगर आप उन रेट्स को कैलकुलेट करेंगे, पिकेटी और चांसल का आंकड़ा देखिए, तो
तो घटा है जी। प्रति अब व्यक्ति। अच्छा, अब कुछ और आंकड़े भी हैं और उन पर बात की जाए। एक तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट 20 लाख करोड़, पीएम आवास योजना का जो एलोकेशन है उसमें 66% की वृद्धि, करीब करीब 80,000 करोड़, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इसको 33% से बढ़ा करके 10 लाख करोड़ रुपए किया है FY 2024 में। आमिरुल्लाह साहब, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? आपको लगता है ये रोजगार मुहैया कराने में एक प्रभावी कदम होगा? जरूर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां बढ़ता है वहां पे रोजगार को तो बढ़ना ही चाहिए। अब ये देखना होगा कि ये 10 लाख करोड़ में एक्चुअली कितना खर्च होता है। वो पिछले बार के फिगर्स जो आए हैं उससे नहीं लगता कि सारा होगा। इंटरेस्टिंग जो नंबर है वो आवास योजना वाला है। देखिए, आवास योजना में पिछले साल बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा कि 2022 तक तो हम सबको घर देने वाले थे, अब 23 हो गई है, तो वो चूंकि हम नहीं कर पाए, कम से कम हम कुछ घर तो दे दें आवास योजना। राजेश जी, मेरा एक सवाल है, वो डाटा आंकड़ा 2 करोड़ का है और आपको बताओ सर, कोरोना के अंदर सबको देने की बात करी, कोरोना आपको पूछ के नहीं आया था सर, ये यूक्रेन वार किसी को पूछ के नहीं आया था। पूरे विश्व के अंदर में इकोनॉमी चरमरा गई है, भूखे मर रहे हैं, और आप इस कंट्री के अंदर में ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इतने रिफॉर्म्स स्ट्रक्चरल लिए जिसके चलते हम बहुत अच्छे कंडीशन पर खड़े हैं। IMF ये बोलता है, मॉर्गन स्टैनले बोलता है, S&P ग्लोबल ये बोलता है, विश्व भर सारे लोग आज भारत को देख रहे हैं। हमारे साथ कुलदीप जी, आपका असेसमेंट क्या है, इनिशियल आपकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन जो बजट आया उसको देखकर? देखिए, मुझे जो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रजीम को आगे बढ़ाना ताकि काफ़ी लोग उसको सिलेक्ट करें, तो उसको उन्होंने किया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोअर इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, जैसे पहले जो 5 लाख तक जिनकी इनकम उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, अब 7 लाख तक की इनकम को किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा, नए टैक्स रजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको उन्होंने नए सिस्टम में अलाउ कर दिया, तो इसका फ़ायदा भी सब टैक्स पेयर को होगा। अब फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक आप समझें कि उनको पैसा डालने की कोशिश की है। लेकिन इस बजट में एक सीनियर सिटीजन को भी एक अच्छा उन्होंने जो उसकी जो लिमिट बढ़ाई है, जो कि पहले सीनियर सिटीजन आप पैसे की आप 15 लाख जमा करा सकते हैं, वो 30 लाख जमा करा सकते हैं, तो वो थोड़ा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए उनको एक जो विंडो है उनको एक वो मिल गई है। तो मोटे मोटे, और दूसरा मोटे तौर पे जो टैक्स स्लैब है उनको भी इन्होंने जो चेंज किया है। जो पहले इतनी सारी स्लैब थी, हर 2.5 लाख पे ऊपर 5% टैक्स बढ़ जाता था, अब जो 5 स्लैब्स कर दिए, 5 कर दी, 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 लाख 15%, और 12 से 15 के बीच में 20% का टैक्स लगेगा। तो यानी कि जो पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट उनको जो 2.5 लाख की थी वो भी अब 3 लाख की हो गई। तो इस तरह से कुछ उन्होंने आंकड़े गिनाए, लेकिन जो सबसे अच्छी बात मैं ये कहूँगा कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको एकदम से रिलीफ इसका मिल जाएगा। हाँ, जैसे सर, मेरा एक यहाँ पे सवाल था, आपको नहीं लगता कि, मुझे लगता है सबसे बड़ी घोषणा जो है इस बजट में वो है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज किया गया है 33%, जो कि 10 लाख करोड़ होगा, 3.3% आपके GDP के बराबर है। क्या आपको लगता है कि ये ड्राइव करेगा अब अर्थव्यवस्था को? जी, ये जो एक एक्सपेंडिचर में जो इजाफा है, बेसिकली जो पिछले कई वर्षों में हम देख रहे हैं, फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़बरदस्त रहा है। और जैसा उन्होंने खुद ही बताया कि 3 वर्ष में ही जो है ये तिगुना हो गया और रेट इतना बढ़ गया इत्यादि, वो सही है। बहुत महत्वपूर्ण ये है, उसमें आप उस स्ट्रक्चर को देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर का स्ट्रक्चर क्या है। अगर वो सारा बुलडोजर से काम होगा और इस तरह बहुत कैपिटल इंटेंसिव अगर होगा, तब रोजगार नहीं बढ़ेगा। इसमें मैं इनसे थोड़ा सा अलग राय रखता हूँ। अब देखिए, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शुरू हुई थी, उससे जो रोजगार का सृजन हुआ, चूंकि वो एक अलग किस्म की संरचना थी, तो आपको अगर बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव जो एक्सपेंडिचर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उससे बहुत कम फायदा होगा। लेकिन जब सरकार एक बात खत्म कर दूं, लेकिन उससे जो जिसको कहते हैं ना मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, अगर वो होते हैं, और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कहां से क्या खर्चा होगा, इसलिए मैं मैंने बात की शुरुआत इससे की कि टोटल एक्सपेंडिचर का क्या हो रहा है। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो देखने वाली बात है फिर ये। जी प्रवीण जी, अब जरा सीधे रुक करते हैं CII का, जहां पर हमारे सहयोगी ये प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं। Get straight to it, and we have Mr. Mukesh Bhutani with us, who's of course the guy that everyone wants to hear from right now. Please explain to us what these new tax slabs actually mean for all of us. Well, the new tax slabs clearly seem to suggest that
the middle class and the lower tax paying fraternity will get the benefit based on the slab rates that were announced. I think the underlying philosophy being that with the growth potential and the increase in demand, the savings that the individuals will realize, they would like to spend it, and that will propel growth. That's one part of it. I think the larger story on tax collection trends seem to suggest that the momentum that India has gained on tax collection, which is robust all around tax collections, not just on GST, but also on direct tax, she doesn't want to lose that momentum. Because her giveaway, which she said towards the end, was just about 40,000 crore. And I won't be surprised if in the overall math, it adds up that substantial part of that benefit was given to the low taxpayers. She's also reduced the slabs from 6 to 5, which is simplification. I think it's a good start. Maybe not meeting the expectations that people had to reduce the slabs to 3 or 4. Also, the surcharge has been reduced. So the effective tax, maximum marginal tax rate with the surcharge that stood at 42.5% has been brought down to 3%. So, you know, there is something for everyone in the budget, at least insofar as personal tax rates are concerned. The last point on capital gains, she chose not to alter the capital gains structure, viewed as complex, a large ask and expectation from the market. So I would have expected that she would have heeded to that expectation, but she hasn't. So I think there is something for everyone on the tax rates and tax slab structure on an overall basis. तो मुकेश जी, मैं आपसे एक बार फिर से ये बात समझना चाहूँगी कि एक बड़ी खबर जो इस वक्त बजट के बाद निकल के आ रही है चारों तरफ, वो यही कि टैक्स स्लैब में बदलाव जो हुआ है और वो बड़ी छूट है। और अब जैसे 5 लाख तक टैक्स नहीं लगते थे, अब 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं देने होंगे, और जो नए टैक्स स्लैब हैं उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो पहले के मुकाबले जो ये टैक्स स्लैब में चेंज हुए हैं, जैसे 0 से 3 तक तो कोई टैक्स देना नहीं है, 3 से 6 में 5% टैक्स है, 6 से 9 में 10%, और ये तमाम चीज़ें वो कितना बड़ा बदलाव और कितनी बड़ी राहत के तौर पे हम देखें। काफी under the new tax structure, so will this incentivize more people to shift from the old to the new? टैक्स ज़्यादा लोग देंगे क्या? Certainly, yes. So when we talk about tax rate changes, there are several changes which you need to look into. For salaried, pensioners, and for self-employed. I think what got missed out in the self-employed, आज के regime में 50 लाख तक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए बेनिफिट है। सिंप्लीफाइड बेसिस पर टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, 50% उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो एक्सटेंड कर लिया है। Not just for individuals self-employed, the threshold has been increased to 75 lakhs, but she has increased it even for MSMEs, which means that now MSMEs, rather than maintaining detailed books of accounts and computing their profitability, can also opt for the what is called presumptive basis of taxation. इसका मतलब आपको खर्चे का ज़्यादा हिसाब नहीं दिखाना पड़ेगा. So salaries, individuals, self-employed, pensioners, there is something for everyone in the slab rate changes. तो बाकी तमाम अब मेहमानों को भी हम शामिल करेंगे और एक एक करके कि जो अब वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है, इंडस्ट्री का पहला रिएक्शन क्या है इस पे? जी, मैं आपसे जी हाँ. मैं तो अपना सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में के बारे में बताऊंगी. इस साल हिस्टोरिकली इट्स द फर्स्ट टाइम दैट द आउटले हैज रीच्ड हिस्टोरिक 2 डिजिट्स. पिछले साल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की आउटले 7.5 लाख करोड़ था. इस बार 33% बढ़ावत की वजह से ये 10 लाख करोड़ पहुंचे हैं, विच इज़ द फर्स्ट टाइम एंट्री एंड इट्स अ हिस्टोरिक 33% इंक्रीज. इसके ऊपर बहुत सारे सेक्टर्स में, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी, बट काफ़ी सारे सेक्टर्स में स्पेशल एम्फेसिस दिया गया हुआ है. रेल सेक्टर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, 50 एयरपोर्ट, मेजर एम्फेसिस ऑन ग्रीन एनर्जी, the support of PPP to many other sectors not mentioned through the infrastructure finance secretariat. और सबसे बड़े बात है कि जो स्टेट्स को फिस्कल डेफिसिट टारगेट दिया होगा, स्टेट फिस्कल डेफिसिट ऑफ 0.5% इज ईयरमार्क फॉर पावर सेक्टर रिफॉर्म, विच इज बेसिकली डिस्कॉम रिफॉर्म. तो बहुत सारे सेक्टर्स में the FM has pressed the button on infra, and I would call it a 10
10-point booster dose for infrastructure. और आप इसको अगर नंबर देना चाहें, जैसे हम लोग पहले भी कर रहे थे बात, तो इंडस्ट्री इसको कैसे आंकेगी? अच्छा बजट मान रहे हैं आप इसे विनायक जी? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से तो हमारे जितने जितने मांगे थे वो मोटे मोटे सब पूरे हो गई. So I would give it a very high rating on the outlays and the specific emphasis on areas that industry has been asking for, like municipal bonds has been mentioned as part of the urban reforms package. This 10 lakh crores, this 33% increase that you talked about, let me get Mr. Ajit Gulabchand to comment on that. How significant is that in terms of the money that the government is putting into infrastructure? Is that going to have a knock-on effect in terms of everything that we want to see, like generating jobs, etc.? What? Your mic, sir. Yeah. It's on. Yeah. As Vinayak said, that they have increased the expenditure on infrastructure to be done to 10 lakh crores for the first time. It is still less than what percentage we really need in order to grow at a faster rate of about 8%. We need to spend 13% of GDP on infrastructure. So this is not meeting that requirement. However, the increase is more than welcome, because at a time that we are struggling to get growth, which is hovering around 6.5%, which is a good thing, because don't forget, America grew at 6% for 60 years to become the richest nation in the world. So it's not such a big thing. But the fact is that this extra infrastructure will bear a lot of fruit. That continuous increase being done in this area is, in my opinion, a good sign. Besides, the budget does not have so many disruptive things, which might make you think that they haven't done enough. But it's better a quieter budget than something that disrupts. When you say disruptive, what do you mean? What would have worried you? Well, it needs a lot more. The reform that we are looking for, which create, for example, when you delicensed everybody in 1991, you created a reform that has rippled for 20 years. Something like this is a little disruptive but helps. But nothing like that has been done. So in terms of not messing around with the budget too much, given the issues of fiscal deficit, current account deficits, not adequate growth as we would like it, though it is better than most of the world, I think a quiet budget is a good one. A quiet budget. Mr. Vinod Agarwal is sitting next to you. Mr. Agarwal, how do you look at your first comments on the budget? How do you look at it? I think for a lot of people right now, the tax thing is the big headline because it affects the salaried middle class. And in that sense, when Nirmala Sitharaman said before the budget that she understood what the middle class wanted and she understood their pain, has she, you think, finally listened to them? Absolutely. I think this is a very good budget, first of all, I would say. And from the auto sector point of view, the allocation on infrastructure, it has been increased substantially, and it is happening over last few years. And the second is, as you know, the auto industry is also going through a lot of transformation and migration to the better fuels. So the focus on all the biofuels, decarbonization, sustainability agenda, green fuels, I think that is very, very commendable. It will help the industry to get into these green fuels. And then, of course, there are a lot of things which are there. For example, the inclusiveness, going to the remote areas. I think a lot of allocations have been made to all these sectors which might have been ignored earlier. So therefore, I would say it's a very, very good growth-oriented budget. And this will put the country for the economy of 5 trillion. तो आप सभी लोग काफ़ी उम्मीद से हैं और होपफुल हैं, उसको अच्छा बजट मान रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि ग्रोथ को, विकास को ये एक गति देगा. अंशुमन जी, आप कैसे रेट करेंगे और क्या आपको लग रहा है कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बात की थी मिडिल क्लास के दर्द को समझने की, तो उस दर्द को उन्होंने समझा है और लोगों में खुशी होगी? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए, जैसा निधि ने भी कहा, कि हेडलाइन यही है कि टैक्स में बदलाव है, न्यू टैक्स
टैक्स रिजीम की तरफ एक पुश भी दिख रहा है, पर स्लैब्स में बदलाव और कुछ छूट लोगों को मिलती भी दिख रही है। सबसे पहले ये जो बजट है इसने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो करंट टॉपिक्स हैं सारे कवर किए हैं। आई वुड गिव, चाहे वो ग्रीन एनर्जी के बारे में हो, चाहे टैक्सेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ बिग थिंग. Some of the important ones I thought everybody talked about infrastructure, no doubt huge allocation. Skill development, so government की जो capacity है, हम कितना भी पैसा allocate कर लें, but government की capacity नहीं उसे implement करने की. जितना भी budget की बातें कर लें, end of the day implementation is what counts. So they talked about skill development. I thought that was very important. Women's empowerment is extremely important. No country has developed or grown where they've not taken women along with them. Tourism is a big one. प्रधानमंत्री आवास योजना को 66% एलोकेशन हुआ है, जिसमें काफ़ी अर्बन पुअर पीपल के लिए हाउसिंग बनी है. सो लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. एंड ऑफ द डे all this is fine. Implementation will be what would really help us to rate how the budget is. जी विनोद जी, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, इससे ग्रोथ को आप कह रहे हैं कि बहुत बल मिलेगा. तो अगर मैं पूछूं कि इसमें से आपको सबसे अच्छी चीज़ बजट में, अगर आम लोगों को हम समझाना चाहें, और इंडस्ट्री से कितना आशावान है इंडस्ट्री जो है, कितनी उम्मीद से, क्या अच्छी बात है, और क्या है कोई ऐसी चीज़ भी आपको लगी जो बेहतर हो सकती थी इस बजट में? देखिए, जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर डिपेंड्स a lot on the economy. And if the budget spurs the growth in the economy, I think it is good for the auto sector. But can be better, of course. One can always say that this could have been done or that could have been done. But I would say overall this is a very, very balanced allocation of the resources at the FM finance end. जी अजीत गुलाबचंद, अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि ये अगले साल में चुनाव भी है, एक तरह से हम चुनावी साल में हैं, और लोगों को लग रहा था कि एक पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है इसमें, तो इसमें कुछ आपको ऐसा लगा है कि लोगों को खुश करने के लिए कुछ ऐलान कर दिया गया है? सरकार अपने सिटीजन्स को खुश करने के लिए कुछ कर रहा है तो अच्छी बात है. क्या ऐसी चीजें इसमें लगी जिससे लोग खुश हो जाएंगे टैक्स के? Certain reliefs have been given in tax exemptions so that leaving money in the hands of the people is not only good for them, it's also good for the economy, because they tend to invest it better whether they spend it or whether they save it. So from that point of view, it has been understood, and where the pain points are is in the middle class and the lower middle class and professionals which earn but go through intricate processes of filing tax returns, etc. I think this has helped. That by reducing their pain a little bit on one side, and also giving them, well, considering there has been a much higher inflation, the relief was even called for just to stay at the same place. I think it's a good thing. लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा बचेगा, स्पेंडिंग बढ़ेगी, ऐसा लगता है. But Mr. Chatterjee, always, whenever you leave money in the hands of the people more, you will get a growth in that country. This has been our that would spur demand experience of the last 30 years. But Mr. Chatterjee, again, There's also one more point I would like to... Please go ahead, sir. I was point out, on the infrastructure field, a major issue that has been troubling infrastructure service providers is that their cost overruns, etc., which have been awarded to them in arbitration, don't get paid. They keep getting challenged in the court all the way to Supreme Court. So it can take as long as 7 to 10 years to get your money. Wow. For that, this has created a lot of trouble in the infrastructure service providers. However, they're now coming up with a scheme on slab basis to see if a voluntary settlement is possible. What is that the government wishes to bring this to an end so the legacy issues can be completely... But I just wanted to ask Mr. Chatterjee that, as you said last time also, there was a significant increase in the expenditure that the government announced for infrastructure, and now of course it's entered double digits. But how much of that has actually got spent? I mean, if you were to just do a report card of implementation, so one is announcement and then there's implementation, where would you rate the government's performance there? The infrastructure spend in the country is on a thumb rule basis, and you're asking about last year, it's roughly about 55, 45. 55% the center spends, 45 the state spends. If you see the data for the first 9 months, the central spend has been pro rata on track.
but the state spend has been lower. And that is one of the reasons you will find that this budget, the FM has gone out of our way to create a structure to incentivize states to spend more. And if I may just take a few seconds more to point out some signaling in this budget. There has been some very clear signaling. For example, you will see that there has been no mention of roads. Whereas for the last 10 years, no union budget talking about infrastructure would have, shall we say, not mentioned roads. It signals a certain maturity of the road network building exercise for the last 25 years in this country and shifts the emphasis to rail, urban infrastructure, green energy and logistics. So the nature of the public policy emphasis is also to be read between the numbers and the sentences in the speech. It's an interesting decipherment of what the government is thinking of are the emphasis areas of the future. Yeah, exactly. So you're saying they're moving away from the traditional infrastructural sort of areas of focus. There's no mention. Irrigation, roads, there is really no mention. But what is the big ticket mentions here? Green energy, railway, there's no mention of metro rail either. So green energy, urban infrastructure and 75,000 crores for logistics. और मैं क्या पहले आपसे राजीव जी ये कहूँगी, एक तो रिक्वेस्ट करूँगी कि हिंदी में बोले हमारे हिंदी दर्शकों के लिए इस समय, और आपको इस बजट में सबसे अच्छी चीज़ जो ग्रोथ को एक तरह से बूस्ट देती है वो क्या लगी है, कैसे रेट करेंगे आंकेंगे आप इस बजट को? माइक सर. My Hindi is not as good as many. जितनी भी आप बोल सके अंग्रेजी के साथ साथ. जी तो बजट तो बहुत प्रोग्रेसिव है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ा दिया है. तो रोड्स की बात नहीं हुई मगर सस्टेनेबिलिटी की बात हो रहा है, एग्रीकल्चर की बात हुई है, रूरल डेवलपमेंट की बात हुई है. और दूसरा चीज़ है ज़्यादा सा एम्फेसिस भी टेक्नोलॉजी, स्किलिंग, एजुकेशन पे भी हुआ है. टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर ने, तो 3 AI लैब्स बन जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. दूसरा चीज़ था कि 5G 100 लैब्स बन जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और 4.5 लाख की अप्रेंटिसेस हो जाएंगे 3 साल में. तो ज़्यादा सा एम्फेसिस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर तो एक था, मगर ये प्रोग्रेसिव फ्यूचरिस्टिक चीज़ जो भी होता है एजुकेशन, स्किलिंग, टेक्नोलॉजी की भी हो रहा है. तो दैट वे आई थिंक इट इज़ वेरी प्रोग्रेसिव बजट. और अगर मैं ये पूछूं कि इस समय जो शेयर बाजार का रिएक्शन है उसमें काफ़ी उछाल देखा गया है, तो एक बजट जो है वो पॉजिटिविटी के साथ आया है, आप कह रहे हैं? It's up more than 1,000 points. Certainly it's with the positiveness. That's the reason why you see there's a progress in the share market too. तो शेयर मार्केट में ये उछाल है. और मैं आप सब लोगों से एक कमेंट चाहूँगी इस बारे में पहले मुकेश जी, कि शेयर बाजार में भी उछाल देखा गया और काफ़ी उछाल देखा गया है, तो इंडस्ट्री कैसे इसे देख रही है, ये टैक्स में कटौती जो है वो, और जो बिग टेक अवेज है इस बजट के वो आपके लिए क्या होंगे अगर समराइज करें तो? अगर एक तो टैक्स में कटौती है, दूसरी सिंप्लीफिकेशन के नाम पे काफ़ी चीज़ें की हैं. सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स जैसे कमिश्नर अपील्स जो डिस्पोज करती थी फर्स्ट अपील, वो अभी डेलीगेट कर रहे हैं जॉइंट कमिश्नर को. जो छोटी अपील्स होंगी इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स की, उसकी रेजोल्यूशन जल्दी होगी. हाई इनकम कैपिटल गेन्स अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 10 करोड़ के ऊपर है तो उसके पर टैक्स ज़्यादा लगेगा. इंश्योरेंस पॉलिसी हाई वैल्यू पे उस पर ज़्यादा लगेगी. TDS का लिमिट चेंज कर दिया है, 30 से 20% ला लिया है, क्योंकि पैन नंबर नहीं होगा तो उस पर TDS लगता था. तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें की हैं. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लीव एनकैशमेंट की लिमिट थी 3 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, वो इन लोगों ने 25 लाख कर दी है. इससे क्या होगा कि जो रिटायरमेंट के बाद लीव एनकैशमेंट की प्रोसीड्स मिलेंगी वो डिस्पोजेबल इनकम में आ जाएगी या फिर सेविंग्स में चले जाएगी. तो ये बहुत बड़ा स्टेप है. और आखिरी चीज़ ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है. स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आपकी सैलरी 15 लाख से कमती है ऑन एन एनुअल बेसिस तो उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें डिस्पोजेबल इनकम बहुत बढ़ाएंगी. इससे जो कटौती हुई है गवर्नमेंट ने ज़्यादा गिव अवे भी नहीं किया है. यही वजह लग रही है जिससे शेयर बाजार, जैसा हम दिखा रहे हैं कि शेयर बाजार में ज़बरदस्त उछाल है और शेयर बाजार खुशी से झूम रहा है, तो ऐसी क्या बात थी इस बजट में? बात यह है कि शेयर बाजार लुक्स एट 2 levels of
push to the economy, investment demand and consumption demand. जी जी This very high allocation for investment in infrastructure pushes investment demand, which then trickles down. And what my friend here has just said is that the positiveness created in the reformatting of the tax slabs is positive for the salaried, the bulk of the middle class. So the share market is expecting higher consumption expenditure. So the combination of higher investment expenditure and consumption expenditure working together, I think is leading to an uplift of sentiment all around, including the share bazaar. Would you say that in that sense, it's actually quite a people-friendly budget? We are also going into a general election next year. So in that sense, would all of you say that it keeps an eye on what people would want? I'll get a comment from all of you. Okay, so I'll just come in on this. It is certainly people-friendly in what I just said. But please also note that there is always a hidden fear and an apprehension that in a country running up to general election, we have seen, across the many years that I'm sure you have covered, that often there is a tendency to be populist. And you will notice that this budget is people friendly, but it is not populist. आप भी मानेंगे इस बात को? ये people friendly है, लेकिन populist budget नहीं है, एक sensible, rational budget है. You don't know what may get announced later, post budget, because now not everything is announced in the budget. That is very true. No, I think what Vinayak said, I would like support. I'm not an expert on the share markets, Sir, but हिंदी में आप बता सकेंगे जी. देखिए शेयर मार्केट कई बार सेंटिमेंट्स पे भी रिएक्ट करती है और जनरल सेंटिमेंट ये है कि हमारी प्री बजट भी बात हो रही थी. देयर वाज अ फियर कि पॉपुलिस्ट बजट आएगी क्योंकि ये प्री इलेक्शन ईयर है, लेकिन सभी की वेरिएबल्स पे वेदर इट इज़ द फिस्कल ग्लाइड पाथ टू फिस्कल डेफिसिट, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. द इनहैंस स्पेंडिंग ऑन कैपेक्स, द ड्राइव टुवर्ड्स व्हाट आई वुड से सिंप्लीफिकेशन साधा और मॉडरेशन पर्सनल टैक्सेस में, ये सब कंटिन्यू हुई है. सो देयर इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑफ रिलीफ. ये जो बाउंस और उछाल आप देख रही हैं, शायद ये रिलीफ का भी उछाल है कि जो फेयर होता है, एक शंका होती है कि प्री इलेक्शन लास्ट फुल बजट में काफ़ी पॉपुलिस्ट होगा, वो नहीं आया है. एंड दैट हैज़ बीन तो किसके लिए ये ज़्यादा अच्छा है विनोद जी? आई मीन प्री इलेक्शन है तो बहुत पॉपुलिस्ट नहीं है, लोगों के लिए पीपल फ्रेंडली है, लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, शेयर बाजार के लिए अच्छा है, या सबके लिए कुछ कुछ है इसमें? देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है जिससे सेंटीमेंट खराब होता. तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है लोगों का और गवर्नमेंट ने सबके लिए कुछ ना कुछ किया है. जैसे इंडिविजुअल्स के हाथ में भी ज़्यादा पैसा है, 35,000 करोड़ का टोटल उन्होंने बताया एलोकेशन. तो इसलिए जो शेयर मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है, इट्स ए ग्रोथ ओरिएंटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमी शुड डू बेटर बेस्ड ऑन दिस एंड फिस्कल डिफिसिट आल्सो इज within control. It is as per their targets. Sorry to interrupt. I mean, generally I see that industry always says 10 out of 10, 11 out of 10. It's all fantastic. We have Sanjay Kapoor joining us as well. If there was something that you wish the budget had, but it wasn't there, is there something you feel it was missing? Something you would have liked to see that wasn't announced, or are you also gung ho about it? So I think, so far what we've seen is a very growth-oriented budget, great push in terms of infrastructure, sustainability, green growth, youth, women. At the moment I can't say anything that hasn't been sort of, that we've been expecting. We were, from an industry perspective, from the auto component industry, we've had a great push towards future technologies. PLI schemes have been rolled out, FAME 2. So, we're all heading in the right direction. We've had great growth within our industry. I think a focus on exports, which has already sort of been announced, focus on domestic consumption with all, everything else that's been announced, will definitely push the industry in the right direction. तो आप कैसे रेट करेंगे इस बजट को? आपके लिए सब कुछ अच्छा है, इसमें ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, जैसा IMF ने पहले इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट बताया था. संजय, आपको लग रहा है ये बजट ऐसा है जो इस राह पे बढ़ता हुआ दिख रहा है भारत? So हमारे if we look at it, it's definitely a great budget from everything that's been announced so far. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबको एक तरह से और ये अब आप देखोगे MSMEs को भी काफ़ी encouragement मिला है. There's credit guarantee for MSMEs और हमारे इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा SMEs और MSMEs हैं तो उनको भी पुश मिलेगा. काफ़ी पुश in terms of skilling, in terms of AI. So these are all headed in the right direction for the automotive industry.
Right. Mr. Reddy, anything you would have liked to see? Certainly, like to see, I'll say that. Before that, coming back to the mood elevation in the nation, irrespective of the percentage of people who pay tax in this country, income tax is very sentimental to many people. So therefore, she touched this income tax right now, almost after 8 or 9 years. I think 2014 was when the restructuring of income tax is done. And I think the slabs were last changed in 2018. So since then, certainly, if I'm not Little mistaken. bit tweaking on the but very slabs, tweaking, but just a tweak, Now the percentage has changed. Yeah. Even at the highest slab, she's given a relief of 4% of taxes. From 42.7, it comes down to about 39 or so. Yeah. So I think that's the one which she certainly has done well in terms of touching the sentiment. To that extent, one could call it also, it's a populistic budget. It may not go into the common Aam Aadmi to say that it touches him. They can always tweak it later on, all right. So that's one positive that I saw. Several things people talked about, positives, all right. But one thing that I personally felt, and CI also has recommendations on it, is on higher education. The spend has to increase. Education spend she has not touched on it at all, except that, creating 3 centers of excellence of AI or 100 labs for 5G. These are probably teachers training, digital libraries, etc. These are some of the tweaks that happened, but I think in higher education we said we should have FDI investments to come by. Section 25 companies have to have equity with them, or there should be funding of higher education, or market should determine what should be the course fees for private institutions. They can't be one other authority. Those were some of the areas which I would have wished I saw from the budget too. मुकेश जी, ये इस बजट में शेयर बाज़ार का मूड बहुत अच्छा है. ऐसी क्या बातें लग रही हैं जिससे इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे बजट की पहले भी यहाँ पर कि एक ऐसा बजट चाहिए जो इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करे, तो ऐसा क्या है इसमें जो विदेशी निवेश को भी और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दे? मैं सुन रहा था पीपल्स बजट, पॉपुलर्स बजट. मेरे ख्याल से ये पीपल्स बजट है, पॉपुलर्स बजट नहीं है. दोनों में से कोई नहीं है. ये एक यूनिक बजट है. अच्छा. जिसमें इन्वेस्टमेंट थ्रस्ट मिल रहा है. विनायक जी ने बात किया इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्टमेंट थ्रस्ट कैसे मिल रहा है, और डिमांड और कंजम्पशन को थ्रस्ट मिल रहा है टैक्स रेट्स चेंजिंग के कारण. सो आई थिंक इट्स अ यूनिक बजट बिफोर इलेक्शंस. व्हाट इज अ पॉपुलर्स बजट एट द एंड ऑफ द डे? पॉपुलर्स बजट्स हिस्टोरिकली आर नोन टू बी बजट्स वेयर बिफोर इलेक्शन यू गिव अवे, you enhance the allocation. Basically, these are freebies that are given. Now, one thing is to say that you're meeting a social objective by giving away these freebies. That is not what she has done. She's put it out very intelligently, say, let me try and do it a much more productive manner. Let me put more money in the hands of middle class, in the hands of higher middle class, and boost consumption. तो जो टैक्स स्लैब्स चेंज हुए हैं वो एक तरीका रहा है जिससे लोगों की जेब में पैसे ज़्यादा गए हैं, हालांकि फ्रीबीज नहीं है. फ्रीबीज नहीं है इस बजट में. एटलीस्ट अनाउंसमेंट तो कोई फ्रीबीज अनाउंस नहीं किया था. सो इन्वेस्टमेंट लेड बजट, प्रोपेलिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, गिविंग अवे बेनिफिट्स टू MSME, self-employed people. Really, these are the important themes for the budget which is driving the market. Mr. Chatterjee, I mean, given then the global economic situation at the moment, the fact that there are so many headwinds elsewhere, how do you think this budget then helps India to stay on that trajectory to 6.5 to 7%? I mean, is that outlook still a tad optimistic, or do you think that this will really set us on that path of growth? Look, fundamentally, in PPP terms, we are the 3rd largest consuming market in the world. So remember, India's economics is largely governed by domestic demand. As I said, both investment and consumption. So it does everything. This budget does everything to increase sentiment for domestic expenditure, both investment and consumption. So to that extent, तो हम लगातार बजट पे चर्चा कर रहे हैं. कुलदीप जी हमारे साथ हैं. कुलदीप कुमार जी टैक्स एक्सपर्ट हैं. सर, सबसे बड़ी कहानी इस बजट की यही है. मुझे आपसे ये जानना है, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख किया गया है, ठीक है. उसके अलावा एक स्लैब भी अनाउंस किया गया है जिसमें कि 3 लाख तक नो टैक्स, 3 से 6 के बीच में 5%, 6 से 9 के बीच में 10%, 9 से 12 के बीच में 15%, और उसी तरह 20 और 30% है. इसका क्या मतलब है? लोगों को ये आप कैसे समझाएंगे? देखिए, अभी तक क्या था, जो 2019 के बजट में जो न्यू टैक्स रजीम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें था कि आप करीब 17 के करीब डिडक्शन थी, आप उसको गिव अप कर दीजिए. वो डिडक्शन क्या थी? आपका HRA हो गया, LTA हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई,
या आप 80cc की 1,50,000 की डिडक्शन हो गई, अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं 50,000 की एडिशनल डिडक्शन मिलती है वो हो गई, या हाउसिंग इंटरेस्ट के लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन हो गई। अगर ये सब करीब 70 की डिडक्शन थी, अगर आप गिव अप कर देते हैं तो आप एक न्यू टैक्स रजीम में जा सकते हैं। जो उस न्यू टैक्स रजीम के रेट क्या थे, वो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं था, 2.5 से 5 तक 5%, और 5 से 7.5 लाख तक 7.5%, तो 2.5 लाख की स्लैब बढ़ती जाती थी और 15 लाख तक ऐसी स्लैब बढ़ती थी, और जो टैक्स रेट था वो भी 2.5% बढ़ता जाता था। तो 15 लाख के ऊपर वो टैक्स का रेट 20% हो जाता था। तो उसका फ़ायदा क्या था कि जैसे जो कोई डिडक्शन नहीं क्लेम कर रहा तो वो उसको ले सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि कोई एक नौकरी पेशा या कोई एक जिसको कि नॉन टैक्स या नॉन फाइनेंस की बैकग्राउंड है, तो उसको बड़ा मुश्किल होता था कि मैं पुराने रजीम में जाऊं या नए रजीम में जाऊं। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कि उसको नए टैक्स रजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पुरानी टैक्स स्लैब को नहीं देखा, मुझे बिल देखना पड़ेगा, मुझे लगा पुरानी टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया, जो न्यू टैक्स रजीम है लोग उसको चुने, तो उसके लिए कि 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है। मतलब कि जो स्लैब है वो 2.5 लाख से 3 लाख होगी एक तो, और दूसरा जो 87A में एक रिबेट है। अभी वो क्या होता था कि अगर आपकी इनकम आज की डेट में 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो 5 लाख की सीमा उन्होंने 7 लाख कर दी। जो 87A की रिबेट है वो 12,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी। तो आज की डेट में अगर आप 7 लाख की आपकी इनकम है, आप कोई डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम नहीं करना चाहते तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा जो बाकी की स्लैब उन्होंने रेशनलाइज किया उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अब वो सोचिए कि एक मिडिल क्लास सैलरीड क्लास जो कि 80C की डिडक्शन वैसे ही मिल जाती है, क्योंकि अगर आपका हाउसिंग लोन है, आपकी प्रिंसिपल पेमेंट जा रही है, या 80C की डिडक्शन आप 1,50,000 ले सकते हैं, आपने एनपीएस में रजिस्टर किया होगा 50 उसकी डिडक्शन मिलती है, आप HRA की डिडक्शन भी क्लेम करते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम करते हो। तो क्या उन सब डिडक्शन को क्लेम करने के बाद और इस नए रजीम में कंपेयर करने के बाद क्या 7 या 10 लाख वाले को बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये मैं आपको थोड़ी देर में इसको एनालाइज करके बता दूंगा। आपके पास आना चाहूंगा ये सवाल को लेकर, क्योंकि जब ये घोषणा की गई वित्त मंत्री की ओर से सबसे ज्यादा तालियां बजी इसी चीज को लेकर के, और उन्होंने खुद भी कहा कि आप सब जानना चाहते हैं, यही सुनना चाहते थे, इसलिए मैं आखिर में इस बात को घोषित कर रही हूँ, अनाउंस कर रही हूँ। लेकिन क्या वाकई इससे फायदा होगा? क्या ये फायदा ज्यादा करके जो न्यू रेजिम है उसके लिए नहीं है? क्योंकि लोग ज्यादा करके उसमें ऑप्ट नहीं कर रहे थे न्यू रेजिम को, लोग पुराने रेजिम में टिके हुए थे। नहीं, मैं आपको एक तो क्लियर कर दूं डाटा, जो पिछले साल ये न्यू रेजिम आई और पिछले साल पैराडाइम शिफ्ट हुई, बहुत लोग न्यू रेजिम में चले गए, जो लोग घर मकान नहीं ले रहे, जो लोग बहुत इन्वेस्ट नहीं कर रखे, जिन्होंने बहुत इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं ले रखी है, ऐसे बहुत लोग हैं भारत में, वो सारे लोग न्यू रेजिम की तरफ शिफ्ट कर गए थे। और अब जो बेनिफिट बढ़ा दिया गया, अब सारे मैक्सिमम लोग ही न्यू रेजिम की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 आपको बताता हूं, रिबेट जो ये 87A का है, इसका 2 लाख का डायरेक्ट बेनिफिट मिला। सेकेंड, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि पुराने रेजिम में था वो भी इसमें लागू कर दिया गया, उसका 50,000 का डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है। तो पहले वो 2 लाख का बेनिफिट मिलता है, ये 50,000 का और एक बेनिफिट मिलता है। तीसरा, आपके स्लैब्स कम कर दिए गए, हर स्लैब में आपको एक स्लैब को पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया गया। तो मैं बता रहा हूं कि 15 लाख तक, जो 3 लाख से 15 लाख के बीच के हैं, या जो 7 लाख से 15 लाख के बीच में है, उनमें सबको टैक्स की भारी छूट है, बहुत भारी छूट। इसमें फायदा ज्यादा है, अभी न्यू में ज्यादा फायदा मिलेगा या और ज्यादा है? डेफिनेटली न्यू में ज्यादा। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट, वो गिने चुने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मकान के ले रखा, उसका लोन ले रखा है, जिन्होंने जितनी भी इंश्योरेंस की हाईएस्ट लिमिट है उतनी सारी चीजें डाल रखी है, ऐसे बहुत गिने चुने ओल्ड में रहेंगे, बाकी न्यू की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। एक सवाल में जी, सर, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। सर एक चीज क्लियर कर दूं, और सुपर सरचार्ज, देखिए सुपर सरचार्ज कई बार लोग अलग अलग उसको बातें करते हैं, पर सुपर सरचार्ज बहुत बड़े जो 5 करोड़ से ऊपर के इनकम वाले लोग हैं उनके ऊपर में सुपर सरचार्ज लगता था और 42% टैक्स होता था। फायदा पहुंचा, 25% कर दिया भाई। उसके अंदर में जो सुपर सरचार्ज के ऊपर जो सेस है वो 37 से 25 हो गया, तो 12% का उनको भी फायदा पहुंचा है जी। तो अब ये एक सवाल मैं प्रवीण जी आपसे पूछना चाहता हूं, और कुछ ऐसी बात किया जाए जो कि शायद सरकार को सुनने में अच्छी ना लगे, और वो बात ये है मनरेगा का बजट। हाँ जी। मनरेगा का बजट 2022-23 में 73,000 करोड़ था, ये रिवाइज हुआ, थोड़ा सा बढ़ा 2022-23 में, करीब 89,400 करोड़ हुआ। इस साल 2023-24 में ये 60,000 करोड़ पर आ गया जी। मतलब मनरेगा से बिल्कुल मन उठता हुआ दिखाई दे रहा है, मन इसका इम्पैक्ट देखिए। नो, ऑब्वियसली हम सभी ने ये देखा, और इस पे शायद एक आम सहमति होगी कि बहुत बड़े तबके के लिए वो एक लाइफ लाइन के तौर पे था, एक बहुत ही दुर्गम इस परिस्थिति में। और ये स्थिति जो है, ठीक है, उससे हम उबर से गए हैं,
लेकिन पूरी तरह से उनकी आर्थिक स्थिति में जो ऐसा कोई सुधार तो हुआ नहीं कि आप कहेंगे इसको हटा दो या कम कर दो। अभी भी जो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, कितने लोगों को मिलता है, उसमें कितने परिवारों को मिलता है? 10%, 15%, उसी के आसपास का आंकड़ा है। तो देखिए, जो सारी चर्चा अभी तक हुई और हम लोग जो सुनते रहे, पीपल फ्रेंडली या जो है सबके लिए अच्छा, आम जन के लिए अच्छा, हिंदुस्तान का बस 10% आम जन है क्या? बाकी 90% का क्या होगा? अगर हम सोचें कि सरकार इस स्कीम को समाप्त करना चाहती है, इसका बिल्कुल वो नहीं करना चाहती, लेकिन रोजगार तो एक समस्या है ना, बेरोजगारी। अब सीएमआई के मैं सुबह डेटा देख रही थी किस तरह से बिल्कुल राज्य स्तर पर और हमारे केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये एक चिंताजनक आंकड़ा है। तो उसकी भरपाई के लिए, क्योंकि एक महंगाई और एक बेरोजगारी, इस बजट में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? मैं आप चारों से पूछना चाहूंगी, पहले आप बताइए। जी देखिए, जहां तक रोजगार के लिए है, लोग ये आशा लगाएंगे कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है, इससे कुछ होगा। जैसा मैंने कहा कि उसमें उसकी संरचना को देखना बहुत जरूरी है। मेरा जो अभी तक जो चर्चा में बातें आई, उसके और पिछले कई वर्षों का जो अनुभव है, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, कोई आज की बात तो है नहीं कि बहुत इजाफा हुआ उसमें, कई वर्षों से ये हो रहा था। रोजगार का उस पर क्या असर हो रहा है, रोजगार पे उसका क्या असर हो रहा है? अगर आप उसको देखिए, जैसे आपने सीएमआई कहा, पीएलएफएस के आंकड़े हैं, जितने सारे आंकड़े देखिए, इस पर एक आम सहमति सी है कि स्थिति जो है भयावह है। और उसके लिए क्या होना चाहिए था कि आपको रूरल रोजगार का जो एक प्रावधान है, उसको तो स्ट्रेंथन करना ही करना चाहिए था। डिमांड ड्रिवन स्कीम है, मान लीजिए लोग ना मांगे। सरकार की तरफ से बोलूं कि भाई अमृत पीढ़ी की बात की उन्होंने, बस एक छोटी सी बात मैं कर दूं, उसमें मेरा मानना यह है कि राष्ट्रीय स्तर पे एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी जो है, उसका इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी चिंता है हमारे देश के लिए। और आप एवरेज की बात कर रही थी ना, एजुकेटेड और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को देखिए, 28% है। अलग अलग स्टेट्स में आंकड़े आपको बहुत भयावह से लगते हैं। हरियाणा में 37, लेकिन इसमें राजस्थान में 20। आमिरुल्लाह जी, मैं आपको लाना चाहूंगा इसमें, ये जो बात कर रहे हैं प्रवीण सर, लेकिन वित्त मंत्री ने जो अपनी बात कही थी रोजगार के, शुरुआत में उन्होंने ईपीएफओ के आंकड़े गिनाए थे, और ये आंकड़े वो हैं जो सरकार हमेशा से पिछले 2-3 साल से लगातार हाईलाइट कर रही है, कह रही है कि ईपीएफओ के आप आंकड़े देखिए कि किस तरह से रोजगार का सृजन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है। तो एक तरफ ये बात भी हो रही है कि सरकार का दावा भी कि रोजगार बढ़ रहा है। देखिए, सरकार ने खुद कह दिया है, कल अगर आप आज देखें तो ईपीएफओ की बात हो रही थी, कल के इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने खुद कहा है कि भाई ईपीएफओ के नंबर हैं वो कुछ मखसूस सेक्टर के लिए हैं, बाकी अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट तो घटता जा रहा है। तो ये तो सरकार की आंकड़े, ये कोई नए आंकड़े नहीं है, ये पीएलएफएस भी सरकार का आंकड़ा है, एनुअल पीएलएफएस भी उन्हीं का है, और इकोनॉमिक सर्वे भी है, और इकोनॉमिक सर्वे तो कल की है। तो ये बात तो तय है और ये सरकार जानती है और कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मसला है। और निधि, वो जो बात कही आपने वो महत्वपूर्ण है कि इस बजट में अगर आप देखें, सारा बजट, अगर मैं सारी चीज़ें देखूं तो मुझे वो जो 2 लोग होते हैं ना, गरीब और रूरल, उनका तो जिक्र ही नहीं नजर आता। नहीं राजेश जी, जैसे स्किल डेवलप, देखिए अमृत पीढ़ी की बात की और सुनने में अच्छा लगा, अमृत पीढ़ी की बात, जो शब्दावली है, अब स्किलिंग की बात की, 36 स्किल सेंटर्स पूरे बनेंगे और उस पर जॉब क्रिएशन की बात भी कही। लेकिन आप भी समझते हैं इकोनॉमी वो कितना होता हुआ दिख रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन वो रोजगार में बदले, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्किल का पिछले साल का आंकड़ा है 13 लाख लोगों को अगर मिलता है तो उसमें से 8 लाखों को नौकरी मिलती है। दूसरा, ईपीएफओ का भी अभी भाई साहब ने कहा कि वो कुछ ही लोगों के लिए, ईपीएफओ कुछ लोगों के लिए नहीं, ये कहीं ना कहीं इनकी धारणा में गलत है। और दूसरा कह रहे हैं कि गरीब और रूरल के लिए, गरीब और रूरल के लिए कुछ नहीं हुआ। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, मकान, सड़क, ग्राम, ये जो 2020 से चालू किया गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हर गरीब छोटे छोटे गांवों में सड़क बन रही है, वो भी रोजगार उत्पन्न कर रहा है। बजट की तो बात नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, हर बजट में आया है। तो एक बेसिकली कोई ऐसा एरिया ही नहीं है जिसमें गैस दिया जा रहा है, जल से नल दिया जा रहा है, और उसके क्वांटिटी को अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत हेवी क्वांटिटी है, सब गरीबों के लिए ही है। और किसके लिए किया जा रहा है? लेकिन राजेश जी, ये चुनावी साल है, चुनाव का बजट माना जा रहा था कि लोक लुभावन वादे किए जाएंगे, इसमें सरकार अपनी पूरी थैली को खोल देगी और जितने वोट बटोर सके बजट के माध्यम से उसकी पूरी कोशिश करेगी। क्या आपको लगता है कि ये चुनावी बजट है? देखिए, चुनावी बजट कभी नहीं आया है।
प्रेस में नहीं, ये तो मीडिया का अपना एक विश्लेषण होता है कि चुनावी बजट कभी नहीं आया, हर बार सबका ध्यान रखा गया, सबका विकास किया गया है कि रोजगार भी बढ़े, गरीबों को भी जो जो जरूरत की चीजें, मूल सुविधाएं जो है वो नहीं मिलती थी भारत के अंदर में। आज भारत के अंदर हॉस्पिटल बड़े कम संख्या में थे, तब आयुष्मान भारत लाना पड़ा, कोई ऐसे नहीं लाना पड़ा। हेल्थ के बजट में क्या हुआ? कुछ नहीं, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, दो तीन चीज हमें बता दी है। प्रवीण सर, आपसे बात शुरू करता हूं। इस बजट में जो है पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन पे काफी कम सुना गया, ना के बराबर सुना गया। कृषि के बारे में भी बहुत कम लिखा है, इसमें मेंशन किया गया। उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो है 20 लाख करोड़ का है, एग्रीकल्चर एक्सलेटर फंड बनाया जाएगा, ट्राइबल के लिए जरूर उन्होंने 15,000 करोड़ रखे हैं, और जो है 38,000 ट्राइबल टीचर होंगे, और नर्सिंग के लिए उन्होंने कही है। इस पे आप क्या? ये जो कुछ छोटी देखिए, कुछ भी है जो अच्छा है वो अच्छा है जी, उसमें मुझे कहीं कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अब आप देखिए, जहां तक फूड सब्सिडी पे है, ये घट गया 2.87 लाख करोड़ से 1.97 लाख करोड़। ठीक है, नरेगा पे संकेत ने पहले ही बता दिया कि 60,000 करोड़ पे पहुंच गए। NSAP, नेशनल सोशल एश्योरेंस वाला जो है, इस एट द सेम लेवल 9,636 करोड़। जल जीवन कृषि सिंचाई योजना पिछली बार बजट में 12,900 करोड़ था, इस बार वो घट के 10,700 करोड़। बिल्कुल, तो इसी ये जो लिस्ट जो आपके पास है, यही लिस्ट मेरे पास भी है। PM श्री योजना जो है, उसके तहत वो एक 27,000 का पूरा विंडो था 5 साल का, उसमें से इस साल का एलोकेशन जो है वो 4,000 करोड़ है। पिछले साल 5400 करोड़। तो मिला जुला के अगर आप देखिएगा ना, जो कृषि को लेके, या जिसको आप कहते हैं कि तमाम जन कल्याण की योजनाएं हैं, और मेरे जन कल्याण में जो सिर्फ 10% नहीं है, मैं 90% पे ध्यान देता हूं, उनकी बात करना चाहता हूं। उनके लिए जो बिल्कुल कारगर स्कीम होते हैं, जो डायरेक्टली उनको इम्पैक्ट करता है। श्री योजना शुरू हो रही है सर। अच्छा, ऐसे मैं रोकती हूँ, हापुड़ चलते हैं। अच्छा, ठीक है, हमारे सहयोगी सौरभ वहाँ पर किसानों के साथ मौजूद हैं, आइए सीधे आपको। अच्छा, अभी आए नहीं है, अभी वो हापुड़ पहुंच रहे हैं। अच्छा, कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप आएंगे, श्री योजना होगा। देखिए, ये सब जो बातें हैं ना, वो तो मिलेट का है, मिलेट को इंटरनेशनल मिलेट ईयर है। 7 चीजों के बारे में उन्होंने, लेकिन उसमें एक आप जो बात कह रहे थे कि ये बजट कम कर दिया, तो आप जानते हैं कि जो PM अन्न योजना थी, जो कि कोरोना को लेकर के शुरू की गई थी, उसका चूंकि मर्जर किया गया, और ये तो घोषणा भी 3-4 महीने पहले कैबिनेट में हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि आप अगर जब योजनाओं को मर्ज करेंगे तो बजट पे तो रिफ्लेक्शन दिखेगा उसका। सही है, लेकिन ये बात पूरी इस तरह से आनी चाहिए। लेकिन आपको ये भी देखना होगा, उससे जो है, जो एक्सपेंडिचर है उन लोगों का टोटल, उस पर क्या फर्क पड़ता है। जो अनाज अगर कम होगा तो भाई बाहर से तो आप खरीदेंगे ना, कहीं बाजार से, तो उस पे जो क्या होता है, जो टोटल ये है नहीं, इस पे जो एस्टिमेट्स है, जैसे आप लोगों ने शायद, संकेत ने शायद अरुण कुमार से बात की थी इस पे, ये कि इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा पॉवर्टी पे, सिर्फ इस वजह से कि उनका जो जेब खर्च अनाज लेने में कितना होगा, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो आपको इन सारी चीज़ों को तो देखना ही होगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये रैशनलाइजेशन ठीक है, आप मान लें कि चलिए अच्छी चीज़ है, 2 स्कीम्स से आपने उनको मिला दिया, एग्रीगेट में इम्पैक्ट क्या होता है उसका, आपको ये तो देखना पड़ेगा ना। और बाकी सारे हेड्स आप देखिए ना, जितने सारे हैं, मान लीजिए 20 बड़ी ऐसी योजनाएं जो आप कहेंगे कि जन कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, उसमें आप देखिए 2-3। तो क्या इसमें एक जो चर्चा का विषय ये भी होना चाहिए, इस पर मेरे ख्याल से हम लोग बात नहीं कर रहे, कि जो बजट घाटे को लेकर के उन्होंने बात की थी कि हम इसका टारगेट जो है धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं, और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि वो 2024-25 तक इसको और नीचे लेकर के आएंगे। तो आपको लगता है कि शायद ये भी एक कारण है कि हाथ खींच रही है सरकार कई जगह से? देखिए, दो चीजें हैं ना, कि आप या तो कहीं से रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे, अगर खर्चा बढ़ाना है, उसके बिना तो आप खर्चा बढ़ा ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये क्या हो सकता है, वो संभावनाएं क्यों नहीं सरकार तलाशती हैं? तो राजेश जी, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि सरकार जो है वो लोक कल्याण के और जन कल्याण, जिसको कि बहुत बड़ा इलेक्शन प्लैंक सरकार का बताया जाता है कि ये लोक कल्याण की सरकार है, जन कल्याण की सरकार है। अभी बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई, उसके गेट के मेन गेट पे सबसे बड़े बड़े अक्षर में ये लिखा हुआ था। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि ये तो खर्चे सरकार कम कर रही है जन कल्याण। सर, खर्चे एक तो क्या है कि हम इस तरह भी नहीं लुटा सकते कि हमारी पाकिस्तान वाली हालत हो जाए, हमारी श्रीलंका वाली हालत हो जाए, ये हम नहीं कर सकते। हाँ, ये देश का सोचते हैं हम, इलेक्शन का नहीं सोचते।
ना हमने कभी सोचा है। ये जितनी भी चीजें हैं देश को लॉन्ग टर्म में ध्यान रखते हुए जिस तरह से हमको फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहिए 6 से 5.9 और आगे 4.5 तक लाना है, तो वो हमने लगातार हमने उस चीज पे पहल करी है। दूसरी चीज है, बहुत लोक लुभावने चीजों की जगह पे, अब भाई साहब अभी जब कह रहे थे ये जो 80 करोड़ को जो देते हैं दोनों को ऐड करके देख लीजिए, सामने सामने डाटा क्लियर है कि वो ज्यादा है पहले से। फिस्कल डेफिसिट टारगेट मीट करना चाहते हैं, 5.9 का टारगेट है। सर आप कुछ करना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा, अगर आप देखें इस बजट में एक सिल्वर लाइनिंग और थी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का उन्होंने जो किया 7.5-10 लाख करोड़ कर दिया है, वो भी कुछ हद तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि अब जितना इनमें पैसा जा रहा है, कहाँ खर्च होता है, सड़कें बनती हैं, कितना रोजगार जनरेट होगा, लेकिन सरकार ने जो पीछे उनकी जो पॉलिसी थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। एक क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था कि पुराने रजीम को और वर्सेस न्यू रजीम का, तो पुराना जो रजीम है अब किसी के लिए भी बेनिफिट नहीं रहेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिल ही जाएगी, चाहे आपने 2 लाख की आपको हाउसिंग इंटरेस्ट की डिडक्शन ले लीजिए, सेविंग इंटरेस्ट की 10,000 की डिडक्शन ले लीजिए, और इसके अलावा आप HRA की डिडक्शन भी लीजिए। आप सब डिडक्शन जितनी भी ले लीजिए, सब ले लीजिए, उसके बावजूद भी आपको नया टैक्स रजीम टैक्स की सेविंग देगा। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब सरकार आपको अपने इंश्योरेंस के लिए, अपने हेल्थ के लिए आपको इंश्योरेंस लेना है, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी का इंश्योरेंस लेना है, तो वो जो लोग अपनी सेविंग अपने फ्यूचर सोशल सिक्योरिटी के लिए जो करते हैं या प्रोविडेंट फंड में सेव करते हैं, उनके लिए कोई इंसेंटिव सब खत्म हो गया। इसका मतलब पैसे खर्च करें, सब पैसे खर्च करें, ताकि लोग खर्च करें तो कंजम्पशन बढ़े, कुछ उससे हो। शायद इस बजट में ये कोशिश है, लेकिन इससे पहले भी जो सरकार करने की कोशिश कर रही थी कि कैसे लोगों को ये डिडक्शन से लोग झूठे क्लेम कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, वो इनसे दूर होना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से सिंप्लीफिकेशन के लिए ये एक अच्छा डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन कैसे इस यंग वर्किंग पॉपुलेशन को अपनी सोशल सिक्योरिटी कैसे करें, क्योंकि उनके लिए कुछ भी नहीं है। आज से 2030 के बाद या 2035-40 में जब ये लोग अपने उस एज में जब इनको सपोर्ट की जरूरत होगी, तो अपने लिए कैसे सेव करेंगे वो? तो मेरे ख्याल से उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सरकार को कुछ ऐसा इंसेंटिव देना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ लोग सेव करें। मेरा एक सवाल है, जैसे कि जिसको पेंशन नहीं है जिस नौकरियों में, वो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है? जिसके लिए पेंशन नहीं है, सरकारी पेंशन नहीं है, जिसके बाद जो एनपीएस वो कहाँ जाए फिर? तो वो अपना अनाज ले सरकार से, उसका तो सिंपल ही है, जब इनकम टैक्स कहाँ से देंगे आप? आप तो ज्यादा इस डायरेक्शन में चले गए। लेकिन राजेश जी का वाकई ये मकसद है सरकार का कि आप चाहते नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस में लोग पैसा लगाएं, लोग अपना प्रोविडेंट फंड में लगाएं, लोग अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर करें, और इसलिए लोग कि चाहते हैं कि न्यू रेजिम में सब चले। सर देखिए, मैं आपको बताऊं, न्यू रेजिम में तो आपको शिफ्ट करना होगा, कुछ सिंप्लीफिकेशन पूरे वर्ल्ड में है। हम इतने सारे डिडक्शन, इतने सारे वो कर नहीं सकते हैं। आज आप लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसको सॉल्व करना। ये इतना सिंपल है कि आदमी को रिबेट मिल रही है, और जितने बेनिफिट उससे ज्यादा बेनिफिट यहाँ दे दिया ना, जो सारे बेनिफिट तो पिछली बार ही। ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एक बहुत अहम है कि क्योंकि विश्व भर में जिस तरह से हालात हैं, हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वाकई में एक सेविंग का माध्यम होना चाहिए। किस तरह से हम बचत कर सकते हैं, क्योंकि जो विश्व भर के आर्थिक अर्थशास्त्री वो कह रहे हैं भी थोड़ा पैसा संभाल के खर्चो, सरकार कर रही है, लेकिन आम जनमानस कैसे करे, ये समझेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। तो बजट हमारे सामने आ गया, उसके पहलुओं को हम बारीकी से समझने की कोशिश करें। खास मेहमान मैं अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। तो आपसे जो कुलदीप जी, आप हमें ब्रेक में हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि अगर एक मध्यम वर्ग या एक आम जनमानस सेव करना चाहे, पैसा अपना बचाना चाहे, बचत करना चाहे, क्या वो करेगा? देखिए, अगर बचत करना चाहे तो सबसे पहले तो कुछ पैसा अपनी पत्नी के नाम पे जमा करा दे, क्योंकि जो 2 लाख का जो वुमेन का उन्होंने दिया है, 7.5% आपका एश्योर्ड रिटर्न आपको मिल जाएगा। और जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा की बात है, चाहे आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, चाहे आपके अपने लाइफ इंश्योरेंस कवर है, जो फैमिली की सिक्योरिटी के लिए चाहिए, हालांकि इसका टैक्स बेनिफिट नहीं है, तब भी उनको लेना चाहिए। मेरे ख्याल से टैक्स पेयर को इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि अगर आप ओल्ड रजीम में होते, आपको रिबेट मिलती, तो आप तब भी टैक्स पे करते। अब आपको जो टैक्स छूट सरकार इंसेंटिव दे रही है कि आप उन एग्जम्पशन को छोड़े, तब भी हम आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ा नहीं रहे हैं, आपको देने आपको बढ़ा भी नहीं रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उसको, उन सबको अपने उन चीज़ों को, फाइनेंशियल प्लानिंग को टैक्स की वजह से इधर उधर छेड़ना नहीं चाहिए। जो जरूरी है उन चीज़ों को जरूरी उनको लेना चाहिए। बाकी अदरवाइज
चाहे आप बैंक में पैसा रखिए, ये आपका फाइनेंशियल डिसीजन है, इसका टैक्स का इसमें आप कोई एलिवेट नहीं रह जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए या जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी बेचते हैं, शायद उनके लिए ये इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि वो पहले होता था ना कि आप शेयर्स में डालिए, आप डाइवर्सिफाई कीजिए अपने फंड्स को, म्यूचुअल फंड्स में डालिए, तो मगर उस सब में एफडीज में डालते, जब निकालते थे तो उस पर टैक्स होता था। तो उस लिहाज से इस बजट में क्या हुआ है? उसमें कोई चेंज नहीं है, जो सिचुएशन आज से पहले थी वही सिचुएशन आप। इसकी वजह से ये हुआ है सर कि जो इंश्योरेंस के स्टॉक है वो पूरी तरह से लाल हो गए, पूरी तरह से गिर गए हैं। तो मतलब कोई इंश्योरेंस वगैरह को लेकर के अब आप तौबा तौबा करने का समय आ गया है। नहीं सर, देखो लोग, अब ये परसेप्शन है, थोड़े दिन के बाद मतलब कि राजेश जी जो इन्होंने बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो हमारी भावी आगे की पीढ़ी है, जो 2040 में जो होगी, उनके पास बजट का क्या जरिया होगा? क्योंकि हम जो भारतीय, हम अपनी LIC, FD, म्यूचुअल फंड थोड़ा ये संभल के अपना पैसा संभालते थे, अब वो क्या करेंगे? सर अब तो गवर्नमेंट ने आपको इतनी प्यारी प्यारी योजना दे दी है, और वो सारी गवर्नमेंट की योजनाएं जो बढ़ती रहेगी। सर जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, आप लोग यूं ही हाथ हिलाते थे, उसके बाद भी बढ़ते गए, लोग लेते थे। सर आप लोगों ने हरदम हाथ हिलाया, आपकी प्यारी प्यारी बढ़ते गए। आपकी प्यारी प्यारी योजनाओं पर एक इनोसेंट सा क्वेश्चन, और वो ये है कि नेशनल एजुकेशन मिशन जी, उसका बजट पिछले साल 39,500 था जी, वो इस साल 38,900 हो गया है। रियल टर्म्स में घट गया। ठीक, रियल टर्म्स में घट गया। अगला ये जो प्यारी प्यारी योजना नंबर 1, ठीक है सर, उसको छोड़ करके दूसरे के जो है, उसको क्यों छोड़ दे? नहीं, उसी में सर, उसी में टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट जो है उनको चालू कर दिया, लाइब्रेरी चालू कर दिया, डिजिटल लाइब्रेरी चालू कर दिया है, फिजिकल लाइब्रेरी चालू कर दिया, इन सब में बढ़ा दिया गया है। ट्राइबल के एजुकेशन से रिलेटेड एक और प्यारी सी योजना एकदम, जिसको कहते हैं नेशनल हेल्थ मिशन जी, 37,160 करोड़ था पिछले साल का। जी जी, इस साल 36,780 रुपए हो गया, करोड़ रुपए हो गया। वो हो गया। वेलनेस सेंटर बढ़ा देंगे, ये जो आरोग्य आयुष्मान भारत है, इन सब में फंड बढ़ रहा है। अच्छा। आज देखिए कहीं ना कहीं ओवरऑल हेल्थ का बजट देखें तो जो कांग्रेस के टाइम 1% होता था, उसमें 2.25% आ गया। GDP का 2.25, GDP भी बढ़ी है, उसका 2.25। आयुष्मान भारत की बात की, आपकी तीसरी प्यारी योजना, उसका बजट का एस्टिमेट था, बजट अलॉटमेंट था 2022-23 में 4,177 करोड़। रिवाइज एस्टिमेट हुए 1,885 करोड़, यानी कि आपने कम खर्चा किया जी, मतलब आप 50% भी यूज नहीं कर पाए। नहीं, वो कोरोना के लिए उसको बढ़ाया गया था। आपको इस बार कोरोना था, इस बार बजट में प्रावधान, इस बार बजट में प्रावधान 4200 करोड़ का है आयुष्मान भारत जी, जबकि आप पिछले साल पूरा यूज भी नहीं कर पाए। सर मैं आपको बताऊं, कोरोना के टाइम बहुत ज्यादा लोगों ने यूज किया, कोरोना के टाइम पे ज्यादा बजट को एलोकेशन करना पड़ा, क्योंकि 22 करोड़ लोगों ने यूज किया है। आपको मानना पड़ेगा इस सर आयुष्मान भारत 22 करोड़ ने का यूज ज्यादा किया है। नाम नहीं लिया गया है। प्रवीण सर, आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो 7 सप्तऋषि जिसे कहा गया है, इस पे थोड़ा चर्चा कर लें। क्या इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, मैंने हिंदी में लिखा आपके लिए, रीचिंग लास्ट माइल, अंतिम आदमी तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनलीजिंग जो है पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर, जी, ये जो 7 जो पॉइंट है, क्या आपको लगता है ये इंजन है जो इस बजट का? ये तो जो कहते हैं ना, वो मार्गदर्शन वाली बात जी, है जी। तो आप जरूर मार्गदर्शन जो है इन क्या कहा जाए, नारों को लेके अपने लिए सोचते रहें, लेकिन उसको आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं, एक्चुअल जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं एक्सपेंडिचर साइड को। उसमें क्या हुआ, उसमें अगर आप देखिएगा तो उसमें तो कहेंगे ना कि हम एक्सपेंडिचर जो है 33% इंक्रीज करने वाले हैं। कैपेक्स पे आपने किया ना, सही बात है। वो तो मैंने शुरू में उसका स्वागत किया, कहा कि भाई अच्छी 10 लाख करोड़ का आप है उसको ना? कंटिन्यू करें, अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है हमारा, और ओवरऑल उससे जो इकोनॉमी की कैपेसिटी होती है, उस पर जो प्रभाव पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण है उसमें। लेकिन आपको ध्यान देने की बात यह है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना क्या है उस एक्सपेंडिचर की। ग्राम सड़क योजना, वो इनफैक्ट नॉमिनल टर्म्स में उसी जगह है जहां थी। आप देख लीजिए पिछले बजट को और इस बजट को, रियल टर्म्स में फिर घट जाता है वो। तो इस सब तरह की जो चीजें हैं, ऐसा क्यों था 80 के दशक में 5.5% ग्रोथ, जो एनुअल, जो डेकेडल ग्रोथ जो था हमारा एनुअल, उससे आप
2% लेबर ऑब्जॉर्प्शन कर रहे थे, अभी आपका क्या है? 7-8% ग्रोथ के बाद भी लेबर ऑब्जॉर्प्शन क्या है आपका? यही है सवाल स्ट्रक्चर का। आप उन चीजों को कैसे एडजस्ट इसमें करेंगे? एक सवाल जो अमीरुल्लाह जी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे मनोरंजन कह रहे हैं कि हेल्थ पर, एजुकेशन पर ज़्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन एक तीसरी चीज़ जो है सड़क के ऊपर हमेशा आप पिछले 9 साल से अगर देखेंगे तो मोदी सरकार का खासा जोर रहा है, वो चाहे एक्सप्रेसवे हो या फिर नेशनल हाईवेज का हो। लेकिन इस बारे में इस बार जो ज़्यादा उल्लेख न करना वित्त मंत्री का, क्या ये भी दिखाता है कि सड़क को लेकर के उन्हें लगता है कि कम से कम जो उनकी अपेक्षाएं थी वो पूरी कर ली गई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो अभी पूरी हुई हैं, उसमें भी अभी बहुत दूर जाना है। अगर आप देखें कि हाईवे का कंस्ट्रक्शन रेट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी कहा था कि अभी इस रेट को हमें इम्प्रूव करना है। वो दिल्ली से बम्बई हम 6 घंटे में और 8 घंटे में पहुंच जाएंगे, 12 घंटे तो हाँ, तो उन्होंने वो बहुत अभी वो बड़ा लंबा रास्ता है और उसमें अभी हमें बहुत पैसे खर्च करना है। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें ये इस बात को आगे बढ़ाते हुए, तो फोकस जो है, फिनेंस मिनिस्टर ने सिर्फ एक चीज कही कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ से करेंगे। एक्चुअली एक और बात मैं कह दूं कि 10 लाख करोड़ पे हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बड़ी रकम है, लेकिन ये बात हम कई दिनों से कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि $1 ट्रिलियन खर्च करेंगे, ये तो $1 ट्रिलियन से कम हुआ। दूसरी बात ये है कि फोकस देखिए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का हेलीपैड और एयरपोर्ट पे है हमारा। ये मुझे इस पूरे बजट में जो एक बात समझ में आ रही कि वो जो हमारा सबसे ऊंचा तबका है उनके लिए है ये बजट। उस वजह से ये पॉपुलिस्ट बजट है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर जो है वो हमारा 10% है और हमने उन 10% को खुश कर दिया है।